Promising young talent having to see opportunities slip away just because they do not have the right trade skills is a tragedy. Watching underprivileged children drop out of their higher education due to compelling need to earn a livelihood is a tragedy. To helplessly watch the child waste away due to malnutrition is a tragedy. Tata Motors believes in creating aspirations and an equitable social structure. At Tata Motors, all our corporate social responsibility initiatives focus on improving the quality of life of underprivileged communities. Neighboring our business operations, keeping up with the sustainability development goals, our interventions focus on Arogya, health, Vidya Dhanam, education, Kaushalya, skilling, and Vasundhara, environment. We strongly believe in creating an inclusive environment for scheduled caste and scheduled tribes community, women, and person with disability under our Tata Affirmative Action Program. काय करायचं आहे? पैसे चेक करायचे आहेत. परत जे पैसे जमा झाले असतील ते काढायचे आहे. नमस्कार, मी अंजली भरत वगैरे. माझे मिस्टर 5 वर्षाने वाढले तरी पण मानसिकतेमध्येच आहे आणि अशा वेळेस मला बायफने ही दोस्त म्हणून सखी असं निवड केली. तर काय करायचं आहे? पैसे करायचे झाले का नाही झाले ते बघायचे होते. म्हणजे ताईकडे बघले तर माझे 50 रुपये वाचले, वेळ वाचला. परत मुलीची सुट्टी वाचली, शाळेची दिवस वाचला आणि इथेच मी पैसे काढले 2-3 वेळेस. काय करायचं आहे? काही मुलीचे पैसे सुशिक्षित आहे ना ते बघायचे आहे. कोणत्या बँकेचं पासबुक आहे? महाराष्ट्र. "2020 was a year of crisis worldwide when India had shut down due to COVID-19. Tata Motors CSR teams were up and running with agility to thwart the effects of the pandemic all across India. Technological expertise was the main tool used to face this challenge. Unprecedented challenges arose and Tata Motors CSR team galvanized people from all the plant locations of Tata Motors. Our CSR teams operated on war footing and used innovative approach to reach and supply many far-flung containment areas. Tata Motors teams used available resources and an engineering expertise in setting up and upgrading COVID care facilities on an urgent basis. नीडी विमेन जो AMC एड्स कंट्रोल सोसाइटी में जो HIV इन्फेक्टेड विमेन थी, देयर सिचुएशन वाज वेरी बैड. तो उन्हें हमने ग्रोसरी किट प्रोवाइड की थी इन एसोसिएशन विद टाटा मोटर्स. कोरोना काल में लॉकडाउन में करीब 1740 परिवार को राशन की किट दी. थैलेसीमिया के बच्चों के लिए एक ब्लड कैंप किया जिसमें 40 बोतल ब्लड हुआ है. We met the challenges using digital modes, technology, innovation, and evolved solutions, simultaneously ensuring sustainability. We had to innovate to ensure that the distribution of medicines and relief to malnourished children went on uninterrupted. कुपोषित बालकों के लिए खास अभियान चलाया जा रहा है जिसमें मानव सेवा ट्रस्ट और टाटा मोटर्स द्वारा पौष्टिक आहार और दवाइयाँ दी जाती हैं. मैं भी जाके खावर मेडिसिन लेके आती थी और बच्चों को खिला देती थी. अब उसका वजन ऊंचा अच्छा है. Family Planning Association of India aimed at sustainability while implementing these Tata Motors Limited CSR projects. So Tata Motors Limited, they told like, okay, once we withdraw the project, still the continued activity should go on in the community. All education institution was shut. Technology, which in normal terms would have percolated in over the next decade, had to be ushered in within weeks. Digitization was the key here.
Employee, volunteers and NGO partners along with our CSR teams have explored huge number of educating options. The biggest challenge of MCGM Education Department is staying connected with their students and to see to it that their regular learning process is not interrupted during lockdown period and post-lockdown period. At that time, Tata Motors approached MCGM to support us with e-content via an app of Navneet. MCGM Education Department and their teachers found this app very useful. विद्यार्थी जो काही लॉकडाऊनमध्ये शिक्षणापासून वंचित होता, प्रवाहापासून दूर गेला होता, पण तो आता विद्यार्थी शैक्षणिक प्रवाहामध्ये आलेला आहे. सभी वर्चुअल क्लासेस में जुड़े हुए हैं, सबके क्लासेस का उनको बेनिफिट भी मिल रहा है. बच्चों की इंग्लिश अच्छी हो गई, बच्चे टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड हो गए. And I'm very happy that the Tata Motors has come forward with immediately the response and agree to support the online studio classes for the whole children of the Navodayans who are appearing for the competitive examination in the current years. We innovate, learn, adapt and adopt digital methodology and reach to our students, and it's make ground reality on 25th of January as a studio classroom program. Tata Motors is now helping our three fellows and the Navodaya Samiti in setting up studios from where classes will be broadcast to students across 194 schools. I'm really grateful to Tata Motors Limited and I am the fellows. Due to their support, now I am in IIT Bombay. टाटा मोटर्स समाज विकास केंद्र वालों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है. यहाँ पर गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और यहाँ पे मतलब हमारे सर मतलब उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हम लोगों को और अच्छे से समझ में आता है. Everything was at a standstill, but people needed help with withdrawing their money from ATMs and getting their lives back on track. Our skill development schemes and training exposed many young minds to technology and fulfilled their aspiration of getting employment in fields of their choice. प्रथम और टाटा मोटर्स की पार्टनरशिप लगभग 7 साल पुरानी है. आज तक लगभग 2500 से भी ज़्यादा युवक युवतियों को अलग अलग ट्रेड में हमने प्रशिक्षित किया है. In April 2020, when the lockdown took over, we started talking to different industrial partners, different leaders to understand what kind of changes do we need to bring about in our training program to make it more effective post-COVID. We converted our content into a 15-day virtual program which students could learn at home using their smartphones. टाटा मोटर्स के साथ मिथिला मोटर्स की जॉइंट वेंचर पे CSR एक्टिविटी के थ्रू हमारा ये ट्रेनिंग मैकेनिक मोटर व्हीकल चल रहा है. बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हमने चूज़ किया, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बच्चे भी इंटरेस्ट ले रहे हैं. कोरोना के कारण से लोगों का रोजगार छिन गया. एक टाटा मोटर्स ने जो कैपिटल दिया था हरा खरीदने के लिए, उसके कारण से लोगों को कम से कम एक परिवार को 4000 से 5000 ज़्यादा आमदनी मिली. फिर हमने इनको 6 महीने का ट्रेनिंग दी, काम करना चालू किया था. लोगों ने झूठ पे पहले ही काम किया. लगभग टाटा मोटर्स से इतना ज़्यादा इनको ऑर्डर मिलता था कि रात दिन इनको काम करना पड़ा. इस काम से बहुत ज़्यादा खुश हैं. We kept on forging ahead to ensure that the environment we live in stays healthy to mitigate the problems of the future. उसके अंतर्गत हमारे स्कूल में कॉम्पिटिशन्स रखे जाते हैं जिसमें पर्यावरण के प्रति बच्चों में जागृति आती है और इसकी वजह से बच्चों में अवेयरनेस आया है और बच्चे प्लास्टिक का यूज़ बिल्कुल नहीं करते हैं. The COVID-19 struck and we had to go online. Tata Motors still supported us and we took a challenge of reaching out to 15,000 students across India. At Tata Motors, CSR is woven into our very fabric of existence. We firmly believe that for any individual or corporate, growth, happiness and health are a direct result of caring for the world and people around us.